हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको अपने प्लेन को फिर से फ्लाई करके दिखाया है। आपने मेरे प्लेन फ्लाइंग की फर्स्ट वीडियो जरूर देखी होगी, अगर ना देखी हो तो उसे जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में मैंने प्लेन को दोबारा से फ्लाई करके दिखाया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था कि प्लेन हमारा उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, लेकिन जब हमारा प्लेन फर्स्ट टाइम फ्लाई हुआ उसके बाद वो वहाँ पर गिरकर डैमेज हो गया था और उसे हम घर पर ले आए। फिर से हमने इसे रिपेयर किया, क्योंकि वहाँ पर भीड़ काफ़ी सारी थी, इस कारण अगले दिन वहाँ पर हम उसे फ्लाई नहीं कर पाए थे। इसलिए हम अपने प्लेन को एक एकांत जगह पर ले गए फ्लाई करने के लिए। पहली बार फर्स्ट टाइम जब हमने प्लेन को फ्लाई किया तो काफ़ी अच्छे से ग्लाइड हुआ और लैंड करा लिया हमने। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. उसके बाद हमने अपने प्लेन की हाइट थोड़ी सी और बढ़ाई और उस टाइम प्लेन को लैंड कराते समय प्लेन हमारा पेड़ पर जा अटका और वहाँ पर मुझे खुद से प्लेन को उतार कर लाना पड़ा। Baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, won't you let the light shine through. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. घर की तरफ मुड़ाए दे रहा है।
कर दिए ले पकड़ा था। अगले दिन फिर से फ्लाई करने के लिए हम अपने प्लेन को रोड पर लेकर गए। वहाँ पर हवा काफ़ी तेज चल रही। वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि अपने प्लेन को इतनी हवा में नहीं फ्लाई करेंगे, पर वहाँ प्लेन को देखकर काफ़ी सारे लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने प्लेन फ्लाई करने के लिए हमसे कहा। इस कारण हम प्लेन फ्लाई किया। लगभग 500 मीटर हाइट पर प्लेन पहुँच चुका था और 1 किलोमीटर डिस्टेंस भी आगे जा चुका था और दिखना बंद हो गया। और वहाँ से वापस लाते समय हमारे प्लेन की जो स्टिक थी, हमारे विंग की जो स्टिक थी, वो टूट गई। देख सकते हैं ये अभी हम लोग अपना प्लेन फ्लाई करके आए हैं और इसमें एक स्टिक पड़ी हुई थी जिसे सेठा बोलते हैं, वो यहाँ से ब्रेक हो चुका है। इस कारण हमारा पर ये बेंड हो रहा है। अभी इसे रिपेयर करना है हमें। तो रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस हड्डी को निकाल के दूसरी हड्डी इसके अंदर डालेंगे। ये थोड़ा टफ है निकालने में से, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। इधर भी देख सकते हैं ये हड्डी इसकी बाहर आ गई। काम करें अब सीधा के महत्व समझाओ। चलो इधर वाले चक्को पकड़ो। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. लौटा के कैसे भाग रहे।
पक्का नहीं चाहिए वीडियो और लास्ट टाइम पर हमने अपने प्लेन को काफ़ी अच्छे से लैंड करा लिया। ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही, प्लेन हमारा काफ़ी अच्छे से फ्लाई और लैंड हुआ, मज़ा ओवरऑल बहुत आया। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में मैंने अपने प्लेन को छत से उड़ाकर दिखाया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर प्लेन मेकिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही अपने RC गरुण चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप ज़रूर देखें। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।